Okay, we are live. Okay. So if there's nobody, you have the text. Okay, so if she doesn't need the text, then we don't need to show the text. Yeah, that's fine. Um, I'll send you the link. You want me to Huh? Yeah, please post it. Manda. Manda. If you can put this so that we are showing the thing, it'll be good. Okay, I'm gonna start 7:30. Okay? Is that okay? Can I start? Can I start? ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ अस्य श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रमाला मन्त्रस्य वशिन्यादिवाग्देवता ऋषयः अनुष्टुप् छन्दः श्रीललिता परमेश्वरी देवता श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजम् मध्यकूटेति शक्तिः शक्तिकूटेति कीलकम् श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी प्रसादसिद्धिद्वारा चिन्तितफलावाप्त्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापि नवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् ॐ
श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्य क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरीक्लिप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षिद्दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वयी लक्ष्यरोमलताधारता समुन्नेयमध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजैष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा शिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराली मन्दगमना महालावण्यशेवधिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका मणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमात्मात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्नि प्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता
मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवदतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितः श्रीगणेश्वरा महागणेश निर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठादः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी बिसतन्तुतनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी प्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा निरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयग्नि निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्प महाताण्डवसाक्षिणी
महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुन्दरी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्माधर्मविवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी उन्मेषनिमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्या रनत्किङ्किणीमेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नि रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती कन्दा करुणारससागरा कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी संहृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्लादनचन्द्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानन्दसन्तति परा प्रत्यक्षितीरूपा पश्यन्ती परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गाररस संपूर्णा जया जालन्धरस्थिता ओड्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहो यागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता सद्यः प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवतायुक्ता षड्गुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशिका रूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी
प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयन कुमुदाह्लाद कौमुदी भक्तहार्दतमो भेद भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा चिच्छक्तिश्चेतना रूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजबृन्दनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तिस्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी शुभ्रुशोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्तिः संवृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वला क्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाधिष्ठानाम्भुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता मेदोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्ति संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रानैकरसिका हाकिनीरूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा
मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासना लभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षकिङ्करी भूतकमला कोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा भालस्थेन्द्रधनुः प्रभा हृदयस्तारविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डिनी तिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रह क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लिप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठनिषेशितनिजाश्रिता राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया लयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता
भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूल जराध्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकि घना घना रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डा सुरनिषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदा त्रिसुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी कलानिधिः काव्यकला रसज्ञारसशेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परञ्ज्योतिः परन्धाम परमाणुः परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणि ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नि भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवावर्णरूपिणी जन्म मृत्युजरा तप्त जनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रह कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्थाकुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलनाकल्या विदग्धा वैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी
स्तोत्रप्रिय स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभव मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चनप्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पणसन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनघाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडद्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां साहस्रकं इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ओम्। We'll do the Vaidyanath Ashtaka. Usually we do something for Shiva after Devi. So, yeah. Shri-Rama Saumitri Jataayuved षडाननादित्यकुजार्चिताय श्रीनीलकण्ठाय दयामयाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। शम्भो महादेव 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 शम्भो महादेव। गङ्गाप्रवाहेन्दुजटाधराय त्रिलोचनाय स्मरकालहन्त्रे समस्तदेवैरभिपूजिताय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। शम्भो महादेव 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 शम्भो महादेव। भक्तः प्रियाय त्रिपुरान्तकाय पिनाकिने दुष्टहराय नित्यं प्रत्यक्षलीलाय मनुष्यलोके श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव
शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव प्रभूतवातादिसमस्तरोग प्रनाशकर्त्रे मुनिवन्दिताय प्रभाकरेन्द्वग्निविलोचनाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय शम्भो महादेव 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 वाक्श्रोत्रनेत्राङ्घ्रिविहीनजन्तोः वाक्श्रोत्रनेत्राङ्घ्रिसुखप्रदाय कुष्ठादिसर्वोन्नतरोगहन्त्रे श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय शम्भो महादेव 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 वेदान्तवेद्याय जगन्मयाय योगीश्वरध्येयपदाम्बुजाय त्रिमूर्तिरूपाय सहस्रनाम्ने श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय शम्भो महादेव 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 स्वतीर्थमृद्भस्मभृताङ्गभाजां पिशाचदुःखार्तिभयापहाय आत्मस्वरूपाय शरीरभाजां श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय शम्भो महादेव 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 श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय स्रग्गन्धभस्माद्यभिशोभिताय सुपुत्रदारादिसुभाग्यदाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय शम्भो महादेव 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 बालाम्बिकेश वैद्येश भवरोगहरेति च जपे नामत्रयं नित्यं महारोगनिवारणम् शम्भो महादेव 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 शम्भो महादेव
हरिओम। हाँ, ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। Just do a short bhajana on TV. जय अम्बे मातु भवानी जय अम्बे। जय अम्बे मातु भवानी जय अम्बे। जगदोद्धारिणि जय अम्बे लोक संहारिणि जय अम्बे। जगदोद्धारिणि जय अम्बे लोक संहारिणि जय अम्बे। जगदोद्धारिणि जय अम्बे लोक संहारिणि जय अम्बे। जगदोद्धारिणि जय लोक संहारिणि जय अम्बे। जय अम्बे मातु भवानी जय अम्बे। जय अम्बे मातु भवानी जय अम्बे। दुर्गति हारिणि जय अम्बे पाप विमोचनि जय अम्बे। दुर्गति हारिणि जय अम्बे पाप विमोचनि जय अम्बे। दुर्गति हारिणि जय अम्बे पाप विमोचनि जय अम्बे। दुर्गति हारिणि जय अम्बे पाप विमोचिनि जय अम्बे। दुर्गति हारिणि जय अम्बे पाप विमोचनि जय अम्बे। दुर्गति हारिणि जय अम्बे पाप विमोचिनि जय अम्बे। जय अम्बे मातु भवानी
Bhavani Jai Ambe. जय अम्बे जय अम्बे मातु भवानी जय अम्बे Jai Ambe, Jai Ambe, Matu Bhavani, Jai Ambe. जय अम्बे जय अम्बे मातु भवानी जय अम्बे Matu Bhavani, Jai Ambe. मातु भवानी जय अम्बे Matu Bhavani, Jai Ambe. मातु भवानी जय अम्बे Shri Jagadamba Maya ki. जय Hari Om, everyone. Happy Navaratri. So happy to see all of you in our center. By God's grace, everything is going so beautifully. So, as we all know, during this time, there's worship of Devi, these 9 nights. And many times we'll know a lot of the stories, how Devi defeated this Mahishasura, and then there's nice stotram, and we can enjoy. But there's a lot of significance to this. And one is to understand, all of us, no matter who we are, even the smallest creature, every single one has mother. Everyone has a mother. And when we reflect on the greatness of our mother, Matre Devo Bhava, we can think, what makes mother great? We know that beyond just our day-to-day interactions with mother, that when that child is in the womb, it is the mother's body that sustains that child. Father has his role to play, definitely. But mother is the one, her food becomes the food of the child. Her thoughts become that environment for the child in the womb. The speech that she speaks, that child is hearing. And mother's body protects that child as well. So we think about all of this and we think of Devi as our mother. But if we think a little deeper, each of us has a mother, but every mother has a mother, and that mother also has mother, and it goes on like that. So then we can think, who is the mother of all the mothers, all the beings? Whose body sustains each and every creature? Whose form protects, sustains, nurtures? That is Devi only. That is why it is never called Father Earth. It's never called Mr. Earth. It is always called as Mother Earth. Not because, we want to exclude anybody, but rather that each of us should feel that loving hand of that mother protecting us at all times. Traditionally, these 9 nights, they're broken up or they're somewhat divided into 3 aspects of Devi. First, she appears as, in the first 3 nights, as Mother Kali, Mother Durga. Then as Mother Lakshmi. And then finally, in the last manifestation, as Saraswati. Now, it is one and same mother appearing as all 3. But depending on what we need to grow, she has to come in different forms. When we were small, if we did not do our homework or did not do our chores, she comes in one form. Then, if we need something to sustain us, something to give us strength, she comes in one form. Then, when we need to understand, mother is always first teacher. So these aspects of Devi we are going to explore in the other 2 nights. But tonight, I wanted us to do a little reflection on one very beautiful verse. It was written by Kalidasa, and it was in his, he has written one epic poem, and in that, this is the invocation verse. And some of you might be knowing, very beautiful. Meena ji knows, that's good. It is like this, huh? Om Vagarthabhava Sampruktau Vagartha Pratipattaye Jagatah Pitarau Vande Parvati Parameshwarau. The meaning of this verse is so beautiful. Anytime we used to have Sanskrit class, we used to chant
I used to ask the students, we would chant this together as invocation. So let us understand the meaning first. Huh? It says, Vaga artha iva sampraktau. Like the way that vag means a speech or the words, and artha and their meanings, just the same way that they are always together, this Parvati and Parameshwara, who are the mother and father of the universe, I do my salutations and seek their blessings. For what? This is also very interesting. Vaga artha pratipattaye. So that I may understand correctly what is the meaning of all of the words and their meanings. Hmm? So this is the meaning of the verse. Huh? This mother and father of the universe, Jagata Pitaro, mother and father of the universe, one day I do my salutations. You are Parvati, mother, and Parameshwara, Shiva. You are always together, just like words and their meanings. And by worship of you, may I please understand correctly words and their meanings. Because why? In a very, in the most understandable way, we can understand that this means in any study I undertake, please let me not misunderstand what the teacher is trying to say, what the textbook is trying to say, what my own mind will tell me. May there be no confusion in all of these areas. Gurudev had a very nice anecdote. He said that there was once some students, some shishyas, they were trying to understand electricity. They're trying to understand electricity. They said, how can we understand electricity? Where is it? Someone said, you see that port in the wall? That is where electricity is there. How do we come to understand this electricity? So one of them went and put their finger inside, and they got one huge shock. And they started to shout, "Oh, ah!" Like that, they shouted. Then all the rest of the shishyas were watching. They said, "Oh, this person knows electricity. You know what the meaning is? To go ooh and ah." So they all started jumping, ooh, ah. But by jumping ooh and ah, can we understand electricity? No. That is some side effect of the experience of the understanding. So may I please understand what is the correct meaning of these? So many words are there, especially Shastra. There, depending on which tradition you are, you can be Ganapatya, you worship Lord Ganesha, and they'll say Sarvam Khalvedam Brahmasi, that, oh, Lord Ganesha, you are this Brahman, and all things are nothing but you. And then you will go to Shakta tradition, Devi worshippers, they will say, what Ganesha? All is Devi. Then you will go to Shaiva, then they'll say everything is Shiva. Vaishnava, what are you talking about? Look at my Lord Shiva, Lord Vishnu. So, like that, all these words, let me not get confused by them. It is said that these Shastras, we must be very clear why we are studying. Because why? They are Shabdajalam Maharanyam. They are like a net of words and a great forest. Easily, in a net, you will get caught, and in forest, you will get lost. So these two things happen. Either we get so caught up with, oh, what is this little bitty tiny detail? And if you don't agree with this detail, you and I can't be friends. All these things happen. We get caught that way with words. Or we don't get caught, we get lost. I don't know who said that. When did they say that? Was that from this verse or that verse? Students experience all these things. As students, we know that feeling. It is said that there are three different kinds of people. One type of people, they know what happened. Second type of person asks, you know, uh, so one person knows what happened. Second person asks, okay, wait, did I say this one wrong? See, also words are confusing me now. How does this go? One person knows what happened. One person, anyway, the third person asks what happened. That is the whole, somehow I'm missing the middle one there. This is very good. Mother is giving good example here in many levels. But some people, they know exactly what goes on, and other people have no idea. So we can get lost in words as well. So, as a prayer, in the most simple way, Mother and Father of this universe, you only must guide me to get the correct meaning in all of these scriptures. Let me not get lost. We do our chanting, we do our prayer, do our puja. But what is the goal of all these things? Let me not lose sight of that goal. That is one.
there's very deep, we can keep on understanding deep how this mantra, this verse, shloka goes. So let us think a little now. Vag, words and artha always go together, huh? Now, what that means is, Jagata Pitarau, you are the mother and father of this universe, okay? So, let me try to understand that. Do you know that for each and every one of us, this entire universe is nothing but words? Names and form, nama and rupa, they will say. But even this, even if you see the form, without the name, that thing cannot be known. Everything we know comes down to the name. In Chandogya Upanishad, it is said, Vacha Rambanam Vikaro Namadeyam, that this entire universe is strung on words. You say, this is a car, that is a TV, that is a lamp, bell. All of these different words we assign to this world. And without knowing the meaning, without knowing the word, even that object, we cannot know its true essence, artha. I'll give one example. In Trinidad, this mortar pestle is there. In that old Bhojpuri language, they're from Uttar Pradesh and Bihar. So a lot of them, they speak, their grandparents and great grandparents spoke Bhojpuri. So this mortar and pestle is there. And in Bhojpuri, they call it Musal and Ukri. That is the name for that mortar pestle. Musal and Ukri. Really? Okay, there we go. So that Bhojpuri, it'll have some differences. Now, imagine now one grandpa and one grandson, they're both together. So grandpa says, I want to make some nice chai. You go into the kitchen and bring that musal and okri for me. Now the child goes to the kitchen. He said, Grandpa, where is it? He said, it's in the cabinet. Which cabinet? Left-hand cabinet. Okay. So he opens it. He said, Grandpa, I don't see that here. All I see is mortar and pestle. Grandpa says, look carefully. Musal and okri, it's there. I've kept it there. No, there's only mortar and pestle. What are you talking about? Move the mortar pestle. Don't you think it's there? But what happened? Two people, they're talking about same object, but two different names, you don't know what it is. So one is this entire universe. There's a great philosopher, Wittgenstein. He said, the extent of my language is the extent of my universe. As much language I have, so much I understand this. So much are the extents of what I understand as this world. So this whole world is nothing but names and forms. And without knowing the correct name, we cannot get to the correct meaning of that thing. Now, let us understand one step deeper now. At the individual level, my mind sees this entire universe as names. Goes on. At the total level now, there is a relationship between, now we try to understand, in Sanskritam, there's a very interesting feature of that language. What is the interesting feature? There's something called as syllables and, the vowels and the consonants. So vowels are a, I, e. And then consonants are k, kh, g, gh, ng. Actually, that is not the consonant. The consonant is that letter and it'll have one halant. Halant means the consonant is there, but it cannot be pronounced. It is like the letter K. You can't say K. You tell the little kids, they'll say, yeah, you can, k, k. But you're adding a vowel there. You're going, ku, ku. Something you're saying. So, consonant is there, and the vowel together with the consonant makes all the sounds. So you get ka, ka, ki, ku, ku. So all those are all the vowels. When you add them now with the consonant, then only it expresses as a sound. Now, let us think a little bit. All words, world is made up of words. All words are made up of sounds. And these sounds in Sanskritam, it is structured in such a way to teach us that, no, it's called Deva Bhasha for a reason. It is a divine language because if we understand the language, what it's trying to tell us, we understand the secret of spirituality as well. So, none of these consonants can express without the vowels. Now it is said
that the vowels are like consciousness, and the consonants is like this Maya. When consciousness expresses through this Maya, it becomes this universe now. So at the total level, Parameshwara is consciousness, Lord Shiva is consciousness. And that Shakti, that power is all this Maya, this our Prakriti, it's mother only. All her manifestation now. So together, when they are together, remember, Samprukta, you're always together. When this consciousness has manifested through this Maya, it has given rise to this entire universe, which is represented in my mind as words. So, even though there are many, many words, now we have to think, Mother, so many words. How am I going to understand God in all this world? The Upanishads have given the secret to that. You know how it is? As long as we call this thing instrument, that thing as lamp, that thing as clock, world will always remain exactly as it is for us. But if I dissolve all the different words into one word, which is what? Om. If I can dissolve everything into God, every word you transform it into God's name, then what happens? You don't see bell, you don't see instrument, you don't see clock, you see Bhagwan in everything. So to get there, see, if who is the one that can teach us the secret, who can, remove the illusion and ignorance? Only the one who cast the illusion. So this is why we might think, oh, I am so smart, I'm going to figure this out. I will. No. We must seek the blessings of Devi, because Devi, I am nothing but a product of your Maya. So if I have to come out of this Maya, you only must bless me. And if you ask, father might be a little strict, but mother, her heart will melt. Said, mother's heart is very soft. By doing our worship to Devi, and you see in Lalita Sahasranam, 1,000 names of Devi. Why? Because there are not even billions, there is infinite number of different names. So dissolve all those different names into at least these 1,000 of Devi. And then you simplify that also, and you dissolve it all into Om. And then that Om also dissolves, and nothing is left but silence. So like that, see, all these practices, we have them. We might have been chanting from so long, but do we understand why we're chanting? Do we understand what is the goal? Otherwise, we will get lost. No, there's so many. If you can spend infinite lifetimes and you won't end all the chanting. No? So we have to know why we are chanting, and what. Even if we study some of those words, the names that they have given to Devi in the Lalita Sahasranamam, they are incredible. So they're all pointing to this reality only. All of these words, they are all your Mahima. You are going on manifesting so many different things. But by your grace, may I understand what is the true meaning of all these words. They are not all different words. They are all actually just this Om. And Om is what? It is the symbol, in Kathopanishad it is said, that Om is nothing but the symbol of Brahman. So by dissolving, eventually I reach the highest. This might sound very complicated, but it's actually quite easy to understand. Our Gurudev used to give, actually not just Gurudev, he used to quote this from all Upanishads, What you have so much nice, especially during Navaratri, everybody gets dressed up so nicely and they go to different kolus. It's like fashion parade. So in that, you will see you have bangle, then you will have nice earring, necklace. So many different names are there, right? Necklace, bangle, earring, that mukutin, so that nose ring. That's it. So many different ones are there, but you can dissolve all of them into one word, which is go. So also all names and forms can be dissolved into this Om, and she is the one who upholds all of that. So Devi, this worship of Devi is very sacred during this time. If there's any block
for any hesitancy, any difficulty in our spiritual practice, in our understanding, this is the time to ask for Devi's blessing. Because, when she comes as Durga, she has all those weapons. We usually think, oh, I've done a lot of bad things, so she's going to come after me if, we've done something. No. All those weapons are there because every wrong thought, wrong notion in my mind, come with all of your weapons and remove them. That we need her blessings. So may that Devi bless us and to keep on understanding and growing more and more. And with her grace, anything is possible. Everything here is because of her only. With her grace, it'll happen. Okay. So now, let us come together for Aarti. We'll do one Shanti and then we'll come for Aarti. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. श्रीललिते अम्ब जयललिते मङ्गलहारति उन्दनके श्रीललिते अम्ब जयललिते मङ्गलहारति उन्दनके हिमवान् पुत्रिनीश निल्पादिनि हिमवान् पुत्रिनीश निल्पादिनि मङ्गलहारति उन्दनके श्रीललिते अम्ब जयललिते मङ्गलहारति उन्दनके हिमवान् पुत्रिनीश निल्पादिनि हिमवान् पुत्रिनीश निल्पादिनि मङ्गलहारति उन्दनके श्रीललिते अम्ब जयललिते मङ्गलहारति उन्दनके
மாலையாய் வருவாள் ஸ்ரீலலிதே, ஷாமளே அவளே ஸ்ரீலலிதே. பாலையாய் வருவாள் ஸ்ரீலலிதே, ஷாமளே அவளே ஸ்ரீலலிதே. சிம்ஹவாಹಿನಿ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ, ಶೃಂಗಾರ ರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ. ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಅಂಬ ಜಯಲಲಿತೆ, ಮಂಗಳ ಹಾರತಿಯುಂದನಕ್ಕೆ, ಮಂಗಳ ಹಾರತಿಯುಂದನಕ್ಕೆ, ಮಂಗಳ ಹಾರತಿಯುಂದನಕ್ಕೆ. जग आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, दिव्य रूप मूर्ति करुणा की। आरती सद्गुरु की, चरणों में उनके शांति समाए, शरणागत की भ्रांति मिटाए। पाप ताप संताप हरण की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की। आरती सद्गुरु की। सिद्ध बाड़ी के तपोभूमि में नित्य विराजे गुरु हमारे। भक्त हृदय आनंद स्रोत की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की। आरती सद्गुरु की। आरती सद्गुरु की। बोलिए सद्गुरुनाथ महाराज की। बोलो मात जगदम्बा की। जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी। जागो जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी। हे गौरी देवी रणचंडी देवी, हे शिव रमणा जननी। हे गौरी देवी रणचंडी देवी, हे शिव रमणा जननी। हे शिव रमणा जननी। हे शिव रमणा जननी। जागो जगदो धारिणी माँ, जागो जगदो धारिणी माँ। जगदो धारिणी माता दुर्गा, जगदो धारिणी माँ। जागो जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी। हे गौरी देवी रणचंडी देवी, हे शिव रमणा जननी। हे शिव रमणा जननी। जागो जगदो धारिणी माँ, जागो जगदो धारिणी माँ।
जगदोधारिणि माता दुर्गा जगदोधारिणि मा ॐ सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Everyone, we are concluding the live stream. Please continue to join in person tomorrow. If not, please join online. Thank you.